हम क्या बोल रहे हैं? तुंदिलः तुंदिल तुंदलश तुंद तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन् तुंदिलोहम भोः। अहम तुंदिलः, टू वर्ड्स देयर। अहम मतलब मैं हूँ, हु आर मी, तुंदिलः मैं तुंदिल हूँ, ऐसा वो बोलते हैं, मैं तुंदिल हूँ। इसके बाद बोलता है ममापि इदम काव्यम श्रूयताम। ममापि, मम प्लस अपि, टू वर्ड्स देयर, राइट एवरीवन? मम अपि, मम अपि, that will be mamapi, mamapi, okay? मम अपि, मेरा भी, टोटल मीनिंग इज देयर, मेरा, मम मेरा, अपि भी, मेरा भी, इदम काव्यम, इदम मतलब यह, दिस वन, काव्यम दैट इज पोएट्री, यस। ममापि इदम काव्यम, काव्यम मीन्स पोएट्री, यस। और फिर क्या बोलते हैं? श्रूयताम, जस्ट लिसन, सुनिए। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य दैट इज पोएट्री, सुनी, श्रूयताम सुनिए, मेरी भी यह कविता सुनिए। ओके? तुंदिलोहम भो, सब कोई और बोलता है ओके ओके, दिस इज तुंदिलह, जस्ट लिसन माय पोएम, आई हैव आल्सो अ पोएम, कुछ इस टाइप का वो बोलता है इन संस्कृत। ओके, नाउ कंटिन्यू। जीवने धार्यताम च, वन वर्ड आल्सो, वन सेंटेंस आल्सो देयर। च मतलब और, जीवने धार्यताम, अपने जीवन में उसको धारण करो। धारण करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धारण करना? हैविंग, टू हैव, यू शुड हैव दैट पोएम। How you should have that poem? When you will listen that poem meaning, then you will get what is the motto, what is the meaning of that poem, and everyone should have that meaning with everyone. So what is the meaning? Listen, listen carefully. I will tell to sing this one. So parannam prapya durbuddhe, परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे, मा शरीरे दयां कुरु, परान्नं दुर्लभं लोके, शरीराणि पुनः पुनः। यस, नचिकेत यू सिंग दिस वन। तो नचिकेत आप इसको सुनाइए बेटा। नचिकेत, यस, जस्ट सिंग दिस वन। यस, नचिकेत, यू कैन सिंग, जस्ट सिंग। ओके, जस्ट सिंग दिस वन, कैन यू सिंग दिस? कैन यू सिंग दिस पोएम, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे? इसको आप गा सकते हैं। यस, जस्ट सिंग नाउ। यू डिड नॉट हैव, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। जस्ट अरेंज फ्रॉम योर सीनियर, इफ यू आर नॉट, यू कांट परचेज इन योर सिरसिला, और if that is not available in Sirhila, yes, yes, okay, no problem. Karthik, you are there na? Come up and sing. Karthik, you also। फिर से गाऊं? चलिए मैं फिर से गाता हूँ। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, माँ शरीरे दयां कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके, शरीराणि पुनः पुनः। इसको मैं सिंग करता हूँ। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, माँ शरीरे दयां कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके, शरीराणि पुनः पुनः। Yes, now who will sing? Now who will sing? Just open your mic and sing now.
Huh? What happening? The best student of my class. All are here. Yes, now sing. Ashmita, first me. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. Next one. Next one, come up. Another one, another one. Very nice, beta. All the members, very nice singing you all are. Next one, come up. Huh? Just be beta. Yes. Nikita there. Nikita, will you sing this? Just sing now. Text. What are you saying? You do not have. Just arrange from your seniors, beta na. Is there any senior in your contact? No. Okay. Do you know anyone's name who is living nearby you? I will provide you number. Say tell again. No one. Okay, 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 okay. No problem. Okay, next one. Where is that one? Sanjana. Sanjana, just sing this one. Sanjana, Shudishna, and I think Akshara also there. Sing now. Yes. शरीराणि पुनः पुनः. वेरी नाइस. बहुत अच्छा बेटा. संजना, आर यू देयर? Yes, she left. She left. Very nice. When teacher is asking something, that time you can left, na? Is it very nice idea? Then I will also left. Yes, Akshara can sing. Okay, okay, okay. So Akshara can't sing. No problem. I think nobody anyone want to sing. Just come up. Otherwise, I will continue. Anyone more? Okay. Listen now. परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धि. व्हाट ही इज सेइंग, हे मूर्ख बुद्धि वाले. दुर्बुद्धे मतलब मूर्ख आदमी. दुर्बुद्धि वाले, हे मूर्ख या बेवकूफ व्यक्ति उसको बोलता है. उसको शी इज शी इज पॉइंटिंग आउट समवन. ही और शी इज पॉइंटिंग आउट समवन. Sorry, there is a he, na? So that he, Tundilah, that person is pointing out the person who is the foolish person. For that he is using word durbuddhe. Oh foolish person, what you should do? Parannam prapya sharire daya ma kuru. Parannam, parannam means others food. Others food. ठीक है ना? दूसरे का खाना. दूसरे का खाना जब प्राप्य मतलब पा करके, when you got another one's food, what you should do? माँ शरीरे दया करो. माँ शरीरे दया करो. What it means? माँ शरीरे दया करो means अपने शरीर. माँ मतलब नहीं, मत. शरीरे मतलब शरीर पर. सप्तमी एक वचन है, सभी लोग लिख लीजिए. शरीर के ऊपर दया माँ कुरु. दया मत करो. दयांग दया माँ मत कुरु करो. मतलब दूसरे का खाना मिलता है ना फ्री ऑफ कास्ट, तो अपने शरीर की भी के ऊपर भी दया मत करो. ठीक है ना? क्यों? यस.
Akshaya joined. Okay, okay, very nice. So what that boy is saying, दूसरे का खाना मिलता है ना, फ्री ऑफ कास्ट मिलता है ना, खूब खाओ, खूब सारा खा जाओ। क्यों? क्यों बोल रहा है कि माँ शरीरे दया करो, अपने शरीर का भी ध्यान मत रखो। डोंट थिंक दैट योर स्टमक विल बी ओवर, डोंट थिंक दैट यू आर गेटिंग सो मच sugar, so it will be, you will be diabetic, you will be patient of diabetes, या you will be patient of sugar, you will be patient of hypertension. Don't think like this. What he is saying कि आपको दूसरे का मिलता है ना, पूरा खा जाओ, जितना मिलता है सब खा जाओ। क्यों? क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके। परान्नम मतलब दूसरे का खाना, दूसरे का भोजन। दुर्लभम लोके, दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल से जो मिलता है उसको बोलते हैं दुर्लभ। तो कठिन, दुर्लभ मतलब कठिन। तो परान्नम दुर्लभम लोके, लोके मतलब इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड another one's food is very we can say, दुर्लभ के लिए इंग्लिश वर्ड क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? दुर्लभ, which we can't get easily. Okay, afford that one na. I am telling only one word. Durlabham means we can say uh, uh, tough to get. Okay na? Yes, 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 again. Yes, difficult. That one is very difficult to get another one's food. So what he is saying कि दूसरे का खाना जो है ना, वो दुर्लभम लोके, संसार में बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन शरीराणि पुनः पुनः, your birth will again, you will get another birth. So आपको तो बार बार जन्म मिलेगा ना, और आपको बार बार शरीर मिलेगा, लेकिन दूसरे का भोजन बहुत मुश्किल है। What he want to say, he is saying if you got another one's food free of cost, then don't think what will happen, just eat and eat. So this is the only a laughing poetry now. Are you getting the meaning, where the meaning is laughing meaning? Are you getting? Yes. No one got? क्या बोल रहे हैं? किसी को नहीं समझ में आया? मतलब ये है कि हमको दूसरे का खाना मिले तो क्या हम कुछ भी खा जाएंगे? अगर हमको दूसरे के खाने में पॉइजन मिलेगा, और वो दूसरे का होगा, पॉइजन होगा, तो भी हमको खा जाना चाहिए क्या? नहीं खाना चाहिए ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जो मिलता है सब खा जाओ। इट मीन्स ओनली दिस इज द लाफिंग सेंस ना। तेजस्विनी, वेयर इज अक्षया? यस, अक्षया, आर यू गेटिंग? डिडंट गेट ना? व्हाट इज द मीनिंग एक्चुअली आई एम टेलिंग? दूसरे का खाना अगर संसार में मिलता है ना, तो अपने शरीर, अपने डोंट डोंट बी केयरफुल अबाउट योर फिजिक, डोंट बी केयरफुल अबाउट योर बॉडी हेल्थ, just what you getting na, eat and eat and eat. If you are getting another ones, if you are getting your own na, just use only very small. But if you are getting another ones, eat and eat and eat. How can, if you can eat 5 chapati, you should eat 15 chapati. Okay, if you can eat rice, a bowl of rice, you should reach eat a big bowl of rice. Okay, this one is he is saying. So this is the actually laughing meaning na, this is the joke like na. You got? Because in the last he is saying why you should eat, because the another one's food is very difficult to get, but our body will be again. So when another body I will get, that time I will again eat. Yeah, that time I will take care of that health. But now if you are getting na,
just eat and eat. So he is only laughing. This is the only laughing poetry, na? Huh? Yes. If you get, then show your thumbs. Yes, very nice. One more thing, all the members, please don't off your camera. All the members, just open your camera always, because this is the instruction for your teacher from regional offices. All the members should open camera, because someone, there was few complaints that the student joined the class and only roaming and roaming. Teacher, how the teacher can find out? Okay, na? So all the members, put your camera on. I can see very easily all of you. And if I will say to show your thumbs, that time you can say na, that time you can show your thumbs na. So all the members, put your camera on. Yes. Now ये सभी लोगों ने समझ लिया ना, this श्लोक you all the members understood na. If anyone had doubt, yes, very nice. Yes. If you understood, then so like this. Yes, very nice. If anyone more have doubt, just come up and ask. Otherwise, I will continue. Okay, I think no one have doubt. So, सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति. सर्वे पुनः, सभी लोग फिर से. सभी लोग means all the members who are on the stage and who are below, sitting in front of them, na? All the members. But puna means again. Attahasam kurvanti. Attahasam, that is a full voice laugh. Full, ha 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 ha, like this, na? Yes, like Ravan. You know Ravan, na? How Ravan was laughing, opening their mouth, so big mouth like this, and so much voice. Yes, that one. So सर्वे पुनः अट्टहासम मतलब खूब ज्यादा जोर से हंसना, और कुर्वंती मतलब करते हैं, मतलब सभी फिर से खूब ज्यादा हंसते हैं. चलो नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं. अब नेक्स्ट मेंबर का नाम है चार्वाकः. तो नए जो नेक्स्ट पोएट नंबर 4 है ना, उसका नाम है चार्वाक. वो भी कुछ बोलता है. क्या बोलता है? उसकी भी एक पोएट्री है, वो भी सुनते हैं हम लोग. आम आम आम. यस यस. शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव. शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव. यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकं पदार्थम् एव भोक्तव्यः. यदि धनं नास्ति. All the members, just read with me, beta. Akshaya, you are not reading. Oh, very bad. Just try to read, beta. If you have textbook, na, read. Yes, very bad. Yeah. If you have textbook, na. If you don't have, yes, if anyone do not have textbook, if possible, that purchase. If not available in your market, just arrange with your seniors. If that also not possible, that time I will share that link. That is already in group. So that, yes. So share that link in group and download your textbook from there. Take a print out and read. Okay, na? Don't. Yes, that's why I am telling, na. Yes, 2 times I send it. So if not there, na, just arrange with your friends already in group there. Just find out there, from there, download your books and print out. Take a print out. If books are not possible, just take a print out from a cyber shop. Okay, na? So yes, very nice. So who have textbook, just try to follow me. चार्वाकः आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव. यदि धनं नास्ति तदा ऋणं
कृत्वापि पौष्टिकं पौष्टिकः पदार्थः, यस पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः तथा कथयति चार्वाक कविः। चलो यहाँ तक कौन मुझे बताएगा? अक्षय आप बहुत लेट आई थी, सो रीड दीज टू लाइन्स, दिस इज पनिशमेंट फॉर यू। दिस दैट आम चार्वाकः, यस आम आम very nice. The one place there, you I think there is a printing mistake in your book. Just correct that one. Tada rinam kritvapi. There is a word rinam. That one is rekar. Okay na? From vowel section, that one is a re. You know na? Yes, very nice. Okay. From any other voice section, anyone want to read this line? From voice section. Who will read? Only Nachiket and Karthik, na? And nobody will think. Nobody will read. Few members saying that they do not have their books. Sanjana, do you have? Sanjana? No reply there, huh? Yes, beta, Ashmita, you only tell. Yes, read these lines. Charvakah from here. Yes, Charvakah am sharirasya from here. Yes, read. Rinam Charvak Charvak Kavihi. Yes, Sudishna, are you there? Just read these lines. Sudishna, yes, just read these lines. भोक्तव्यः. Yes, yes. चार्वाक कविः. चार्वाक कविः. टेल सुदीष्णा. यस, चलो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज देयर? चारवाक नाम का कोई है और वो बोलता है, वो पोएट बोलता है क्या? आम आम, यस यस, हाँ हाँ. शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव. शरीरस्य, शरीरस्य देयर मीनिंग इज शरीर का. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सभी लोग. षष्ठी विभक्ति एक वचन. पेंसिल से लिखिए 6/1, इट मीन्स षष्ठी विभक्ति एक वचन. 6/1. नाउ पेंसिल in your notebook you should write षष्ठी विभक्ति एक वचन total. Here you can write 6/1, it means षष्ठी विभक्ति एक वचन. So write शरीरस्य, it means शरीर का, षष्ठी विभक्ति एक वचन. पोषणम सर्वथा उचितमेव. पोषणम, that is nutrition. The nutrition of the body सर्वथा, always, in the all situation, always उचितमेव. उचितम एव. उचितम प्लस एव, that will be उचितमेव. ओके ना? सो क्या बोलते हैं कि
शरीर का जो पोषण है, शरीर का जो ध्यान देना है, टू हैविंग टेक केयर ऑफ योर बॉडी, दैट इज ऑलवेज ओके, दैट इज ऑलवेज बेटर, that is always perfect, na? But he is saying something more. What he is saying, you can see in next line, next sentence. Yadi dhanam na, yes, then what is the meaning of उचित? मतलब ठीक, अच्छा, ठीक, you know, ठीक, good, yes, you can say better, okay ना? सो शरीर का पोषण हमेशा उचित है, ठीक है, और यदि धनम नास्ति, इफ यू डू नॉट हैव मनी, यदि धन नहीं है आपके पास ना, इफ मीन्स यदि मतलब इफ यू डू नॉट हैव मनी, देन तदा देन ऋणम कृत्वापि, कृत्वापि देयर टू वर्ड, कृत्वा प्लस अपि, राइट लाइक दिस, कृत्वा प्लस अपि, टू वर्ड्स देयर, कृत्वा अपि, in between there, in between you say, you should write a plus sign, कृत्वा plus अपि, that will be कृत्वापि, that will be कृत्वापि. हिंदी मीनिंग इज देयर करके भी, हिंदी मीनिंग विल बी करके भी, और ब्रैकेट में आप लिखिए दीर्घ संधि, संधि का नाम भी आप लोग धीरे धीरे सीखिए अभी. तो कृत्वापि में कृत्वा प्लस अपि, ये दोनों वर्ड्स ऐड हुए तो कौन सी संधि हुई? संधि का नाम है दीर्घ संधि. संधि मीन्स व्हेन टू वर्ड्स will become one word, that time there will be a difference between there. Kritva plus api, their o word will automatically lapse and it will be kritvapi. So here is a sandhi. Sandhi name is dirgha sandhi. Type of, which type of sandhi is there? That name is dirgha sandhi. So you should say ऋणम कृत्वापि, ऋण करके भी. ऋण मतलब क्या बोलते हैं? बारो ना, यू नो बारो ना, डू यू नो बारो? Yes, yes, I think Sanjana asked something. Okay, not asking, only saying yes. Okay, so you all are knowing that rinam, rinam मतलब उधार. In Hindi you can say उधार. Also you can say ऋणम, ऋण बोल सकते हैं आप हिंदी में, और उधार भी बोल सकते हैं. और क्या बोल रहे हैं? कृत्वापि मतलब करके भी, ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः. पौष्टिकः दैट इज न्यूट्रिशस, पौष्टिक in Hindi, पौष्टिक that word is there. In this you must know that nutritious. तो ऋणम कृत्वापि, यस बेटा, ऋणम का हिंदी मतलब है उधार, उ धा र, ओके ना? नाउ ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः मीन्स न्यूट्रिशस या पौष्टिक पदार्थः एव भोक्तव्यः. पौष्टिक पदार्थ मतलब चीजें, पदार्थ मीन्स पदार्थ या फिर चीजें, जो चीजें बहुत न्यूट्रिशियस है ना, वही खाना चाहिए. भोक्तव्य मतलब उसका, उसको खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए. भोक्तव्य खाना चाहिए, हिंदी मीनिंग खाना चाहिए. क्या क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो दूसरे से पैसा बारो कर लो. यस, जस्ट गिव मी, आई विल रिटर्न विद इन फ्यू डेज, एंड डोंट वरी अबाउट व्हेन यू विल रिटर्न. जस्ट आस्क ओनली, just take them, just take money from another ones, and that will be your borrow. And from that borrow money, what you should do? You should use the positive things, the nutritious things. You should eat the nutritious thing from that borrowing money. Don't think that you will return that borrow. Just take and eat and eat and eat. Nah? What he is saying? He is only saying all the
uh, not common things, uncommon things he is saying na. In this poem all the things are only uncommon. From the starting, someone says doctors are very bad, someone says you are the brother of health god, someone says why are you laying on that cheetah. I was not came to your home. How it becomes? Nah? Now he is in last point he told that you when you will get another one's food, just eat and eat. All the things are only uncommon. Nothing is there in proper way. Na? That's why this chapter is named there Hasya Bala Kavi Sammelanam. Okay, na? Okay. So what he is saying, ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः. दूसरे का उधार ले लो और फिर भी खूब सारा न्यूट्रिशियस चीजें खाओ, फ्रूट्स खरीद के खाओ और जो भी चीजें खाने की इच्छा होती है ना, जो अच्छी चीजें हैं, फ्रॉम विच यू विल गेट स्ट्रेंथ. Just borrow money from another ones and eat and eat and eat. Okay, and what he is saying in the last, तथा कथयति चार्वाक कवि ही. चार्वाक नाम का कोई कवि कह भी रहा है. क्या कह रहा है? तथा कथयति, इसलिए, तथा मतलब इसलिए, कथयति मतलब कहता है. चार्वाक कवि इसलिए कहता है. क्या कहता है? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत. इसे सुनिए. यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत. Sanjana, will you sing? Sanjana, will you read only? Yes. Sanjana. Okay, both of you one by one. Yavat जीवेत. Listen, I am telling again. Yavat जीवेत. You should say यावत् जीवेत. बता तू. यावत् जीवेत. Yes. यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत. Yes. Yes. Who ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत. घृतम पिबेत. Yes. घृतम पिबेत. Ghritam, that one GHRI, that will be Gri. Yes, I am saying that one. Ko, kho, go, gho. There is ko, kho, go, gho, na. That gho word, na. Yes, second ga. Yes, don't say ga. I will beat. Don't say ga. That is only gho. Say gho. Yes, very nice, na. That one is Gritam Tibet. Yes, who will sing? Tibet means PO. Just drink. Just drink. That, no, what he is saying, he just just borrow money from other one and purchase what thing, that ghee. You know ghee. You know ghee. In Telugu, what is the meaning of ghee? Nayye. Nayye. Okay. Nayye. Nayye. Okay. 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 So okay. So listen. That one घृतम क्या बोलते हैं? That is only very nutritious for your health, ना. So what he is saying, just borrow money from another one and purchase that ghee, that one ghee, and drink. Be healthy. Don't think what will happen. Okay, what happened? Yes, no issue of test. Here nothing, no issue of test. Only
In this book only all the things are here. Here not any nahi here in my hand, in your hand. Okay. So क्या बोलते हैं ना कि जब तक जीना है ना भी प्लेजर के साथ जियो, प्लेजर के साथ जियो। और क्या करना है ना, किसी से मनी बारो करो और पी जाओ। क्यों? घी घी पी जाओ। क्यों? क्योंकि nobody knows what will happen in the future. So it is only that is only that is like joke na. Is this a common thing? It's very very unhappening na. So this is the meaning actually. So क्या बोल रहे हैं, जब तक जीना है तब तक सुख से जीना है, प्लेजर के साथ जीना है। और अगर जरूरत पड़ती है, इफ यू okay, I will explain in next class again, don't worry. Just listen, try to listen. Okay. Yes, 1 minute. First I will explain that thing. One minute. Wait, 1 minute wait. जब तक जियो सुख के साथ जियो, अगर जरूरत पड़ती है, just borrow money from others, purchase that nahi from market and drink and be healthy. Don't be worried about what will happen, how will return your borrow money. Just eat and drink. Who knows? You will be again here. Nobody knows, na? He is telling like this. Huh? Is it good? Huh? It's very bad, na? This is very uncommon like something, na? So this is the meaning. और ऋण करके भी घी को पियो, उधार करके घी पियो, उधार ले करके घी पी जाओ। ये मतलब पी जाओ, जस्ट ड्रिंक। ओके, yes, very nice. So for today our class is now over. We will discuss after a few minutes. For today our class is now over. Thank you so much.